What's up everyone, ये तपेश कुमार here and आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. It is the most commonly asked question and the most relevant question also. CPL करना है, पायलट बनना है, पैसे कहाँ से लाऊं? So today I'll be telling you guys how you can arrange money for CPL and also I'll tell you how I arranged money for my CPL. So let's get started. So this video is divided into 3 parts. Part number 1 is how much paisa you actually require to do your CPL, to do your type rating, to do your airline training. Part 2 will be how do you get that money, and part 3 will be how did I arrange that money. So do watch the video till the end to know कि मैंने पैसे कैसे जोड़े थे और मेरे पेरेंट्स ने पैसे कैसे जोड़े थे मेरे CPL के लिए. Before we continue, a small update for you guys. तो अभी सभी घर बैठे हो राइट, एंड अगर 12th कर लिया आपने या फिर आप CPL कर रहे हो और बीच में अभी छूट गया है, स्टॉप आ गया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. आई थिंक अ लॉट ऑफ यू ऑल्सो नो दिस ऑलरेडी, बट वी स्टार्टिंग ऑफ विद आवर ऑनलाइन क्लासेस at Vinodhyada Aviation Academy. So do not waste your time sitting at home. Do something productive. Join the classes. Registration link is in the description, or you can visit vyaa.in. Also, you can call up or WhatsApp on the numbers on the screen or in the description. Let's continue. तो भाई सबसे पहले बात आती है कि आपको पैसे कितने चाहिए. So for CPL in today's date, you require somewhere about 30 to 35 lakhs. इतना आपके मिनिमम पैसे लगने वाले हैं. इससे ज़्यादा you can go even up to 50 lakhs, but on an average you should assume that it will cost you about 30 to 35 lakhs. Now these costs will obviously vary depending on what country you do it from, what flying school you do it from, but 35 lakhs is a very good middle amount. अब उसके बाद बात आती है कि टाइप रेटिंग में और एयरलाइन ट्रेनिंग में कितना पैसा लगेगा. सो टाइप रेटिंग, फॉर दोज ऑफ यू जिनको पता नहीं है, टाइप रेटिंग इज बेसिकली ट्रेनिंग टू लर्न हाउ टू फ्लाई द बिगर एयरक्राफ्ट. CPL के टाइम पे यू लर्न हाउ टू फ्लाई द स्मॉलर एयरक्राफ्ट लाइक अ Cessna 172 और अ Diamond DA-40. टाइप रेटिंग में दे एक्चुअली टीच यू हाउ टू फ्लाई द बिग एयरलाइनर्स विच वी एज कमर्शियल पायलट्स फ्लाई. टाइप रेटिंग अगर आप खुद से करने जाते हैं, इट्स समवेयर अबाउट 10 to 15 lakhs के आसपास, depending again on where you do it from. But if you do your type rating with the airline, then your cost for the type rating and the airline training is combined. Now this total cost for type rating plus airline training is somewhere about 20 lakhs and goes all the way up to 55 lakhs. So the cost variation is very high, but on an average let's assume about 25 lakhs because that's what most airlines charge, somewhere in the range of 25 लाख के आसपास. So हमें 30 से 35 लाख रुपए लगे CPL में, 25 लाख रुपीज़ लगे अपने को टाइप रेटिंग और एयरलाइन ट्रेनिंग करने में, प्लस 5 lakhs का एक बफर ले लेते हैं. सो टोटल कॉस्ट इज अबाउट 60 to 65 lakh rupees to become a commercial pilot as of today. Now obviously these costs will vary with time. आगे जाके most probably बढ़ेंगी, but it also depends upon how rupee versus dollar, rupee versus euro and all of that shit. So now let's get to how do I get this much money. Now the investment is huge, I understand. For anyone, 60 lakh, 65 lakh rupees is a very big amount, and how do you arrange it? That's the question I'm gonna answer now. If you guys like the video, if you think it's helping you out, if the content is helpful, if the content is good, please do subscribe to the channel. If you subscribe, मुझे confidence मिलता है कि मैं ऐसे videos बनाता रहूँ and I bring you guys some good aviation stuff. Thank you. तो भाई सबसे आसान और सबसे simple तरीका है, अमीर घर में पैदा हो जाओ. If your parents, your grandparents, your relatives, someone is rich, you can always get the money from your family. This is the number one and the most preferable method. Now this is obviously not in our hands, but if you're rich, being a pilot for you is not a problem. But now let's get to, for those of us who are not rich, हम लोग क्या करेंगे? For those of us who do not have the money, the first option that we have is getting an education loan. So a loan from a bank is the most straightforward and simple way to go about it. But the problem with that is, especially education loans, is you need a collateral. So you have to put a property that you own or some piece of land that you own, कुछ भी हो सकता है, that you have to keep गिरवे with the bank, and then they will give you a loan in exchange. That loan could be in the form of a personal loan or it could be an education loan. So you can always go speak to a bank. Education loans मिलते हैं, even 100% मिलते हैं for CPL. You just have to speak to the bank and get it done. So the second most common way is कि arrange the money yourself. Don't rely on a bank, don't rely on your family. खुद पैसे इकट्ठे करो. खुद कैसे करोगे पैसे इकट्ठे? Very obviously, मुझसे तो मांगना मत, मेरे पास नहीं है. Very obviously you'll have to work for it. A lot of people do this.
You do your graduation, do your post graduation, do a professional course, कुछ भी करो, and then you get a job, start earning and save that money. I know it's a very very long term plan. ये सब करने में आपको कम से कम 5, 6, 7, 8 साल कुछ भी टाइम लग सकता है. But believe me, a lot of people do it. I have seen doctors do it, lawyers, IITians, MBA graduates. बहुत लोग they first study some other field, work in that field, save up the money required for CPL, and then they come and they do their CPL. Now इसमें you might ask कि age कितनी होती है maximum? So most airlines will hire you all the way till 35 years of age. Some airlines even go to 40 years. So you have sufficient amount of time. समय की कोई दिक्कत नहीं है. This way is a very self-reliant way and it's a very respectable way, जिसमें आपको ना इंटरेस्ट देना है, ना कहीं से लोन लेना है, ना कहीं से पैसे उधार मांगने हैं. So if you can do this, kudos. इसी में I would like to add a very small point, and that is कि you can also work in aviation field but not as a pilot. For example, you can work as a crew members. A lot of them do their CPL. Even नौकरी करते करते CPL करते हैं वो लोग. They save up the money and they study साथ साथ. जब हो जाता है, then they do their CPL, and some airlines actually support their own crew to move on to the cockpit. For example, Indigo, वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको जहाँ पे crew have done their CPL on their own with their own money and they have moved to the cockpit. So working as a crew or working in an airline is also a very great option, because a lot of airlines have this policy wherein they help their own employees get to the cockpits of airplanes. Way of arranging paisa for your CPL is very hated, very controversial, and it's up for debate, and that is scholarships. India में state governments and the central government, they provide scholarships to backward classes. Central government only gives scholarships to SC candidates as of now. This of course can change with government policies. State governments, you'll have to check with your own state government if they provide you scholarship or not. Also some companies, some CSR initiatives from companies offer scholarships. जैसे recently अभी एक हीरो की scholarship आई थी. हीरो तो कंपनी वो जो साइकिल बनाती है, बाइक बनाती है. They had a scholarship wherein they were helping out girls get their CPLs from certain states. I think 10 girls का ले आया था वो. So these companies also come out, plus the government provides scholarships. So if you're eligible for it, might as well go for it. 100% sponsorship होती है, आपको 1 रुपया नहीं देना होता. And I know a lot of people who have actually gone through scholarships and there are some really great pilots. So if that works for you, why not? तो भाई यहाँ तक तो पैसे अरेंज हो गए CPL के लिए, लेकिन अभी अपने को पैसे चाहिए फॉर एयरलाइन ट्रेनिंग एंड फॉर अ टाइप रेटिंग और द कंबाइंड कॉस्ट दैट द एयरलाइन विल आस्क. सो अब ये पैसे कहाँ से लाए जाएँ? इसके लिए ऑप्शन सेम ही है जो पहले हमने देखे थे, बट इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. पॉइंट नंबर 1 इज़ कि व्हेन यू गेट अ जॉब, इफ़ यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एयरलाइन, यू आर एन ऑफिशियल एम्प्लॉय ऑफ द एयरलाइन. Now when you're an employee of the airline, you can always take up a loan. So आप अपनी job पे, the new job that you've gotten as a pilot in the airline, उस job पे you can take up a loan and pay the airline. Some airlines will also help you get a loan. For example, SpiceJet का मुझे पता है, they help you get a loan to pay the amount to the airline. Some airlines also deduct that money from your salary. They will ask for some amount upfront and some amount they will be deducting from your salary धीरे धीरे धीरे. But अगर आपने एक एयरलाइन का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, आपकी जॉब लग गई एयरलाइन के साथ, बट एयरलाइन ने भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कराया है, बट दे हैव आस्क्ड यू टू गेट योर टाइप रेटिंग डन और दे हैव सेंड यू फॉर योर टाइप रेटिंग, इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू टेक अप अ लोन ऑन योर जॉब बिकॉज यू डोंट हैव अ जॉब राइट नाउ. आपने भी एयरलाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है. सो कीप दैट इन माइंड. अगर आपको एयरलाइन बोलते हैं कि आपको टाइप रेटिंग के लिए जाना है, then that cost is something you will have to bear. उस cost को bear करने के तरीके मैं आपको बता ही चुका हूँ. तो by getting to the final part of the video, which is how did I arrange the money? मैंने कुछ arrange नहीं किया था. I did not arrange it at all. It was all done by my parents and I'm really thankful to them. शुक्रिया मम्मी पापा. तो उन्होंने कैसे किया था? They had to take up 2 loans. डैडी कुछ सेविंग्स भी थी, काफ़ी टाइम से नौकरी कर रहे थे तो कुछ सेविंग्स थी. Plus we had to take up 2 loans. One was during my CPL, one was during my type rating. So पहले वाला I think education loan था, second one was a personal loan. It took me about 3-4 years to pay back the loans, but it was all worth it in the end because at the end of the day you have a job. So taking up a loan is okay. Remember one thing though, स्पेशली जो लोन वाला पार्ट है ना, उसमें आप एजुकेशन लोन ले तो लोगे बट वो वापस भी देना है आपको.
एंड वो वापस देने के लिए अगर आपकी नौकरी नहीं लगती देन यू विल बी अंडर अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस. कीप दैट इन योर हेड. थोड़ा सा सोच के चलना उसको लेके. ऑल्सो वन मोर थिंग इज अ लॉट ऑफ यू हैव जस्ट कंप्लीटेड योर क्लास 12th. प्लीज़ अपने घर वालों की और अपने पेरेंट्स की फिनेंशियल कंडीशन पहले देखना. इफ दे आर केपेबल ऑफ सपोर्टिंग यू एंड पुटिंग दैट मच मनी ऑन यू और नॉट. आई नो इट्स अ पैशन, यू आर पैशनेट फॉर इट, यू वांट टू बिकम अ पायलट, बट प्लीज़ ऑल्सो कंसिडर द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ योर पेरेंट्स एंड उसी के हिसाब से उसको भी पिक्चर में रख के देन टेक अ डिसीजन. सो वेल दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई होप यू एंजॉयड इट. आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा. आई होप आई कुड हेल्प यू आउट इन सम वे, एंड इफ आई कुड, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द channel. And if you like my content, do share it around, show it to people, and take care, stay home, stay safe, and I'll see you guys in the next one.